So hello everyone, today it's a proud moment for me because my favorite smartphone Google Pixel 4a जो कि इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन रहा है अंडर 30,000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू NDTV एंड जो मैंने पिछले एक साल यूज़ किया है इंटेंसिवली फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट. अगर आप ऐप्स चेक करोगे KFC वन ऑफ दोज ऐप्स इज़ built my way and tested on Pixel. आप मेरी डेटिंग प्रोफाइल चेक करोगे मोस्ट ऑफ द फोटोज़ of me on my dating profile were from Pixel as well. Instagram पे भी आप चेक कर सकते हो. But now it's time for a big upgrade. So let's quickly compare between Pixel 4a versus Pixel 5a. क्योंकि इंडिया में Pixel 4a लॉन्च हुआ था 30,000 रुपीज़ में एंड Pixel 5a is rumored to be launched in October in India for 33,000 rupees. क्योंकि इंडिया में अगर 30,000 अंडर 30,000 में Pixel 4a was so popular, I'm sure Pixel 5a भी बहुत पॉपुलर होगा. एंड अदर डिफरेंसेस आर कलर में दिस इज़ जस्ट ब्लैक, दिस इज़ मोस्टली ब्लैक. और अगर आप देखोगे सिंस मैंने एक साल यूज़ किया इसमें काफ़ी स्पॉट्स पड़ गए हैं, बट अगर आप वेट क्लॉथ से साफ़ करोगे दीज कैन बी रिमूव्ड ईजिली. दिस इज़ प्लास्टिक बॉडी तो इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है. और दिस इज़ मेटल बॉडी पर इसमें मतलब सॉफ्ट फिनिश है तो डिफरेंस पता नहीं चल रहा, बट यू विल नॉट बिलीव कि क्योंकि ये मेटल है ये ज़्यादा हैवी है. दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. और इसका तो वेट पता ही नहीं चल रहा था बिकॉज दिस वॉज द लाइटेस्ट फ़ोन आई हैव एवर यूज. दिस एक्चुअली फील्स लाइटर देन कैंडी बार फोन्स जो इंडिया में नोकिया 3300 जो भी यूज़ किए थे उससे भी ज़्यादा लाइट लगता था और अभी भी है, बट दिस इज़ सिग्निफिकेंटली हैवियर. सो कंपेयरिंग देयर स्क्रीन्स एज वेल, सो पिक्सल पर इंच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिकॉज रेजोल्यूशन थोड़ा सिमिलर है, बट बड़ी स्क्रीन होने का मज़ा ही कुछ और होता है. यू कैन वॉच ईजिली. अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, यूट्यूब मेरे पास प्रीमियम है, सो आई कैन डाउनलोड मूवीज़ एंड वॉच movies better and more comfortably on the go. And since Pixel 5a is significantly bigger, मैंने सोचा कि स्पीकर भी शायद बड़ा होगा. But speaker quality is exactly the same. Both are really loud and crystal clear. I think this is the best speaker I've ever seen in any Android smartphone. Now talking about the camera, double tap to open the camera is super helpful. और क्योंकि इसमें है wide angle lens, so there's 0.6x and 2x zoom options. और मेरा favorite feature, my favorite part of Pixel's camera is the portrait mode. आप यकीन नहीं करोगे if I take any पोर्ट्रेट मोड फोटो राइट नाउ ऐसा लगता है कि DSLR से फ़ोटो खींची गई है. इसका जो ब्लर है इट इज़ मच मोर देन अ नॉर्मल स्मार्टफोन. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ पिक्सल फॉर ऑल माई पोर्ट्रेट शॉट्स. आप देख भी सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम अ लॉट ऑफ पोर्ट्रेट फोटोज़ आर ऑल्सो फ्रॉम पिक्सल एज वेल. एंड अदर देन दैट आई पर्सनली थिंक नाइट मोड के लिए पिक्सल इज़ स्टिल द बेस्ट. अगर आप देखोगे मेरे किचन को ड्यूरिंग नाइट मोड उसने पूरा इल्यूमिनेट कर दिया. देयर इज़ अ डे एंड नाइट डिफरेंस विदाउट night mode and with night mode. So night mode के लिए Pixel is definitely winner in terms of any smartphone I've seen. अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हो तो भी Pixel ही जीतेगा. There's a tough competition between iPhone and Pixel, but अगर आप प्राइस देखो like 33,000 rupees versus 1 lakh rupees, there's no competition. Another example of Pixel's sharpness. तो 1x पे फोटो खींच के देखता हूँ पहले. I can see the sharpness of every single book name from that far. Now time for 0.6x. So at this point sharpness is there. When you zoom more then it's kind of less. And Pixel is also my favorite because of the ecosystem. तो इसके कारण मेरे पास Google TV या फिर Chromecast with Google TV भी है. I'll unbox that later. But let's conclude with the video that I think कि Pixel 5a is definitely a complete smartphone for me at this price at least. लोग कंप्लेन करेंगे कि रिफ्रेश रेट ज़्यादा नहीं है, बट मैंने पर्सनली रिफ्रेश रेट ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं किया. आई हैव ओनली सीन मैक्सिमम रिफ्रेश रेट ऑफ 90 हर्ट्ज, दैट ऑल्सो Pixel 5 लास्ट ईयर. सो आई डोंट नो हाउ इट मेक्स इट स्पेशल. आई नो कि गेमिंग ज़्यादा स्मूथ होगी. But I didn't feel much difference because I've never seen or never played
in 120 hertz environment. अगर मैं feel करूँगा, then coming back to 60 hertz will be problem. तो इस कारण I don't think it's a game changer for me, so that's why I love Pixel. और screen quality is just amazing. तो इतने बड़े screen में with the hole punch camera, so it feels pretty much bezel-less coming from an iPhone. So that's why it will be my next favorite smartphone. और इंडिया में जैसे ही लॉन्च होगा तो मज़ा ही आ जाएगा यार. It will be a game changer, I'm sure. 4K HD and HDR. So Google TV setup हो चुका है, and the number one benefit is that the power button actually works to power on TV as well. So one remote to control everything now. So I don't need to go back to my TV's remote. And other than that, अगर आप homepage पे जाओगे, on the homepage you can see all of my apps all together. So for example, the movies I watch on Amazon Prime, I think Netflix is not there, but on HBO Max, Amazon Prime, YouTube Music, Apple TV, yeah, Netflix is also there. And HBO Max. So all the apps will have together one page of recommendation. मतलब अलग अलग ऐप खोलनी नहीं पड़ेगी, एक ही पेज पे सारे recommendation दिख जाएंगे. It has all the data, but there's a con as well. Play Silicon Valley. So it says that I need to subscribe even though I've subscribed because it's not in the Google's account. I have a separate app for it and then I see it. जो HBO Max है, you'll have to buy that subscription through your Google account. Otherwise, it'll be difficult. So that's why I currently have HBO Max subscription through AT&T because मेरे Wi-Fi में free था. So that's why, like, I don't have HBO Max recommendation visible here. But अगर आप वो खोलोगे, then it will become easier. But currently, I can see a lot of shows in my recommendation which I have no idea. These are all random. I don't watch these movies. ये बिल्कुल random है. Another benefit is I can hold this button. So play the song on and on. Play on and on. On and On by Daniel Levi. Sure. Playing on YouTube. अभी ad आ रही है, but like you got the point. I don't have YouTube Premium right now. Expire हो गया, अभी दोबारा खरीदना पड़ेगा. But you got the point, right? And volume, everything is controlled here. And how can you forget about Chromecast, or you can cast your entire Android phone on TV. I'm gonna play Asphalt 9. Come on. भाई tutorial बंद हो जा. The quality is definitely not as good as on the phone. शायद मेरे Wi-Fi slow होगा. Wi-Fi has to be the best in order to play games with the highest resolution, but it's not that bad. पर मुझे फिर भी मज़ा ज़्यादा इसका आ रहा है बिकॉज आई एम एबल टू गेट सराउंड साउंड थ्रू द टीवी. एंड नॉट जस्ट दिस, अगर मैं फेस टाइम पे बात भी करता हूँ व्हाट्सएप पे, नॉट फेस टाइम बट व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, आई कैन सी एवरीथिंग ऑन माई टीवी. रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है, आई थिंक फ्रॉम अ डिस्टेंस it might be better. I think my Wi-Fi, it's slow, that's why resolution भी पूरा नहीं आ रहा. I need to figure that out, how to make the resolution 4K through Chromecast, but otherwise it's all worth. And before Google TV, I used to use Tizen TV on my Samsung TV's remote. तो फ़र्क ये है, the difference is that Google TV is bit more smooth. जैसे मैं forward करता हूँ, if I try to forward a movie, it doesn't feel that smooth on Tizen TV because Google TV is definitely Android. So Android का experience is 10 times or at least 5 times better than Tizen TV. I think Apple TV might be smooth as well, but if you compare the price, $200 for Apple TV versus $50 for Google TV, it's a winner. So that's why I love it. इसमें HDR support भी है, 4K support भी है, so it's all worth it.